cow species in the country. I believe there are just about 43 indigenous species in the country, and Ladakh cow has been identified and recognized by Government of India as one of the indigenous species. This is an honor for Ladakh. It is also a commercial opportunity for Ladakh. Now this is becoming possible again because of science. You look at water supply. We are targeting under Jal Shakti Abhiyan that by 2022 we would like to give 24/7 drinking water to every single household, every single school, every single Anganwadi worker, Anganwadi center in Ladakh. Now, how would this become possible? Again, it is the usage of science which makes it possible, and we are confident that we can do such a thing. If you look at irrigation, again, how does science deliver water to my hilltops, to the areas which are traditionally not irrigated? Because if I can irrigate those areas, then from the present agricultural area of Ladakh, I can make it maybe perhaps 2 times, 5 times, 10 times if I can reach water to those heights. And again, it is science which is going to help. You know, India has been a star nation in the distant past, from which radiated knowledge and science and technology all over the world, and particularly affected East Asia, Southeast Asia, West Asia, Central Asia, and then East Europe. Now, this star nation, in terms of knowledge dispersal and science and technology export, today is not that productive and proactive in terms of this. Now, India's contribution to science and technology in the distant past, these have been described by scientists of international fame and scientists and scholars of international fame. I'll refer to some of the statements that have been made by internationally renowned intellectual and scientists all over the world. The first was Hu Xi. Hu Xi was at one time China's ambassador to the United States, and also China's representative at the United Nations for 5 years. And after that, he was Vice Chancellor of the famous Beijing University in China. Now, he has said about India's contribution to China's civilization in the ancient times. He says, India conquered and dominated China culturally for 20 centuries without ever having to send a single soldier across the border. Now, that's the extent of India's influence on China in the ancient times. It was about two millennia, which India really dominated the Chinese cultural sector. Then Albert Einstein, the legendary scientist, he said in one of his speeches, he said, "We owe a great lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discoveries could have been made." So he is acknowledging India's contribution to mathematics in the ancient times. Now, after that, an English mathematician, Lancelot Hopper, he has said, and I quote, "There's been no more revolutionary contribution than ones which the Hindus made when they invented zero." So he is not saying that India's contribution to mathematics is zero. He's not saying that. Zero is India's contribution to mathematics.
and how significant it has been in the development of mathematics, one can imagine. You know, the numerals that we are using, 1, 2, 3, 4, it's known as the Arabic numerals. And you know, the world except China, Japan, and 1 or 2 other countries, the entire world is using these Arabic numerals. In the Arab countries, the numerals are known as Hinsa. Hinsa means, you know, it originated in India. Hind originated in India, and therefore the numerals are also a contribution of, apart from 0, which had been contributed by the Indian mathematicians. फेस्टिवल उसके बारे में थोड़ा बताइए. इसका ऐसा है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो कि इस बार जो दिसंबर के महीने में 22 से लेकर 25 दिसंबर में को छठा 6th इंडिया इंटरनेशनल फेस्टिवल होने जा रहा है, वो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको कोऑर्डिनेट करती है. और इसके अंतर्गत जो है कि जो अभी जो लेह में जो अभी हम लोग DRDO ने जो काम किया है, जो इसके ये तो हमको जो दिया गया है जिम्मेदारी इसके कटन एजिंग के ऊपर में कि लोग इसके माध्यम के थ्रू जो यहाँ के दूर दराज में लद्दाख के दूर दराज फार फ्लंग एरियाज़ में हर एक एज ग्रुप के, चाहे स्टूडेंट्स हो, फार्मर्स हो, आम पब्लिक हो, सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए साइंस का क्या बेनिफिट है. तो इसके ऊपर इसके लिए किया गया है. और इसमें जो आज के जो हमारे चीफ गेस्ट थे श्री RK माथुर जी, जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू इसका कटन मेजर किया गया है. और उन्होंने साफ बोला है कि जो साइंस का जो है कि साइंस का सोसाइटी है, साइंस सोसाइटी एंड का काफ़ी एक यूनिक कम्बिनेशन है. साइंस के बिना सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. और अभी तक हमने पूरा देखा जो भी और अभी पूरे वर्ल्ड में और जहाँ तक इंडिया में इसके साइंस के बारे में हम लोग सब जानते हैं और साइंस का क्या बेनिफिट है सोसाइटी के सब जानते हैं. और ख़ासकर जहाँ तक लद्दाख की बात है तो यहाँ का जो लद्दाख का जो क्लाइमेट है, वेदर है, और यहाँ सब कुछ डिफरेंट है. एक तो हाई एल्टीट्यूड होने के कारण तो यहाँ का जो एज इट इज़ जो हम लोग प्लेन एरिया में जो साइंस होती है वो यहाँ डाल नहीं सकते हैं. तो जो भी साइंस होता है वो उसको यहाँ के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ता है. तो इस तरह से जो अभी हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब ने भी लद्दाख के लिए के साइंस के बारे में काफ़ी फोकस किया है कि यहाँ पर जितने भी साइंटिफिक कम्युनिटीज है, हर एक ग्रुप के हर एक फील्ड के लोग यहाँ आए, यहाँ के ऊपर में काम करें. जो कि यहाँ का जो एग्रीकल्चर देखा जाए वो अपने आप में यूनिक है. या फिर आपको यहाँ एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, यहाँ का इरिगेशन के बारे में, हर तरह का चीज़ें यहाँ का डिफरेंट है. तो उसको तो इस फोरम के माध्यम, ये जो साइंस फेस्टिवल के माध्यम से इट विल क्रिएट ए अवेयरनेस among the students or other groups how we can utilize the benefit of science.